Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today is a new video lesson, a short tutorial about MX Excel shortcut keys. And in this video, you will learn how to add watermark in Excel sheet. इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरह आपने Excel में वर्क करते हुए शीट के अंदर watermark कैसे ऐड करना है. तो without wasting much time, let's start the lesson. स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आपने क्या यहाँ पर आ जाना है. You have to click on the insert tab, and from the insert tab go to the header and footer. Click here. यहाँ पर आपने क्लिक कर देना header footer पर. Left click, left button, and from here you can add pictures. Click on the picture and then insert picture of your choice कि जो भी आपने पिक्चर यहाँ पर ऐड करनी है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना यहाँ से. सपोज मैं यहाँ पर कोई डिफरेंट सी पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ. लेट्स सेलेक्ट सम डिफरेंट पिक्चर्स. सपोज आई ऐड this one. I think looking very beautiful. This one. Select the picture and then click on insert button. Okay, पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद आपने insert पर क्लिक कर देना है. ठीक है. उसके बाद आपको क्या है, now here you see no pictures, only text is written, and what you have to do is click on any place on the sheet. कि शीट के ऊपर किसी जगह पर आपने क्लिक कर देना है तो पिक्चर क्या आपकी ऐड हो जाएगी. Here now you see the watermark is added in the Excel sheet. कि Excel sheet में क्या है, watermark ऐड हो गया. ठीक है. और नाउ आप इसको जो है ना आप इसका साइज चेंज करना चाहते हैं. यू वांट टू चेंज द साइज. अगेन सेम insert header and footer. Here now you have to click on the picture format. Format picture dialog box is appeared on the screen. यहाँ पर देखें आपको dialog box नज़र आ रहा है फॉर्मेट पिक्चर का. यहाँ पर आपकी साइज, हाइट, स्केल, हाइट, aspect ratio relative to original picture size, height, you can change here. The size of the picture that you have added. Suppose I here changing the size, height and width of the pictures, and after changing click OK button. Here you see the size of the picture is much bigger than the previous one. कि जो पहले आपने अपलोड किया था पिक्चर जो वाटरमार्क, उससे क्या है पिक्चर की साइज क्या है बड़ी हो गई है. ठीक है. इस तरीके से आप जो है ना, अगेन इफ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ द पिक्चर दैट यू हैव एडेड, कि आप उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो अगेन प्लस फॉर्मेट पिक्चर एंड हियर नाउ फॉर्मेट पिक्चर, क्लिक ऑन द पिक्चर. हियर नाउ यू सी क्रॉप. Here you can crop from right to left, top to bottom. You can crop the picture if you want to crop it, and you can change the color brightness. So I change the color here, black and white. Click black and white and then press OK button. Here now you see the color of the picture is changed. In this way you can add or change the color of the watermark. And next thing is that you want to delete it. You have to simply enter the picture option. यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है. उसके बाद आपने इंटर प्रेस करते जाना है. तो जैसे आप इंटर प्रेस करते जाएंगे बिल्कुल डाउनवर्ड, उसके बाद आपने कहीं भी क्लिक कर देना है तो आपकी पिक्चर जो है वो रिमूव हो जाएगी. ठीक है. इस तरीके से जो है आपने डिलीट. Here now you see the text watermark, picture watermark is deleted. So in this way you can add watermark, change its size and color and remove the watermark. So I hope you would like this lesson and practice this lesson, and do watch, like and subscribe my channel and give your precious feedback on this video. Thanks for watching. Thank you.